A five-member panel of farm leaders will now be holding talks with the government to discuss the remaining contentious issues on the table. This was decided at a meeting near Delhi that ended just a short while ago. The meeting was organized by the Samyukta Kisan Morcha, that's the umbrella body of the farmers' organizations. The meeting was held at the Singhu border near Delhi. It wound up just a short while ago. It was a meeting that was held to decide on the future course of the farmers' agitation. The centre on Tuesday had asked for 5 names from the SKM to form a panel to deliberate on the MSP and other contentious issues. एसकेएम ने तय किया यहाँ पे मीटिंग में वो जो 5 लोग तय किए हैं, एक कमेटी निर्धारित की, वो कमेटी भारत सरकार से बातचीत करेगी। राज्यपाल जी हैं जो सीनियर हमारे लीडर हैं, पंजाब से हैं, और शिव कुमार काका जी हैं, ये गुरनाम सिंह चढ़ूनी जी हैं, युद्धवीर सिंह जी हैं और अशोक धवले जी हैं। सरकार से बातचीत करेगी और अगली जो मीटिंग एसकेएम की यहाँ पे होगी वो 7 तारीख को होगी, यहाँ पे ही होगी। 11-12 बजे के आसपास का उसका टाइम रखा गया है और 2 दिन में जो भी सरकार इनसे बातचीत करके अपना एजेंडा साफ करना चाहती है। Akshay was monitoring the outcome of that meeting. So, Akshay, what about any decisions made about vacating the protest sites where we've seen this year-long campaign that actually led to the reversal of those new agricultural laws, the 3 of them? What's going to happen about the protests? They, of course, like we heard, they're going to continue over there with their demands for those critical issues like MSP, etc. But what about the site? Will they continue to stay there and keep the pressure on? Well, Sarah, if we talk about the protest site, and that is the big question as well, that when are the farmers going to go back? And the farmers have cleared that only after their demands are met, they will be willing to move back from the borders of the national capital. Now, we are here at the Singhu border, and you can see all of these farmer leaders, people from the press here who have been waiting for the outcome of the meeting. And finally, the meeting's outcome is that there is going to be formation of a committee, a 5-member committee, which will directly be talking with the government as far as the pending issues are concerned, and to find a solution. And then there will be talks for 2 days with the government of this particular committee, with the central government, with the government of Haryana, and on 7th, the Samyukta Kisan Morcha will again hold a meeting on the on the findings of that committee, on the result of this talk between this 5-member committee and the government. And if there is some sort of a compromise between these two, the government and this committee, then there can be an announcement on 7th of December that the farmers will be moving back. Also, we have been told by the farm union leaders that there was a call made by the Union Home Minister himself on a few days back, and the Union Home Minister had said that a committee should be formed so that the government should know who they are speaking with and who exactly is authorized to speak on the behalf of the farmers. And that is why the farmers today made this particular committee, and this committee now will be talking with the government. So there are efforts from both sides, from the side of the farmers and from the side of the government as well. Now we can say that the farmers move back from the protest sites, and they move back to their villages. Because there has already been over a year that the farmers have been waiting here. All the members are here. You can see Shiv Kumar Kaka, Ashok Dhawle is also present here. Then there is Gurnam Singh Chaduni, Valveer Singh Rajwal, and Yudhveer Singh of BKU Tikat, who all will be part of this committee, and they will be speaking with the government in the upcoming days. I also spoke with a lot of farm union leaders, and this is exactly what they said. We have one of the committee member here with us, Gurnam Singh Chaduni. Chaduni साहब, क्या किन मुद्दों पर बात हुई? अभी जो मीटिंग हुई आप लोगों की कई घंटों तक चली, क्या क्या मुख्य मुद्दे थे? देखिए, मुख्य मुद्दा तो ये था कि अभी तक जो है वो सरकार ने कौन कौन सी बात मानी है, कौन कौन सी बात पेंडिंग है, और आगे हमें क्या निर्णय लेना है, इस सभी बात पे चर्चा थी। और एक हिसाब किताब की चर्चा थी, बस दोनों आज के एजेंडे थे। तो चढ़ून साहब, कमेटी में कितने मेंबर रहेंगे, कौन कौन रहेंगे? जो पेंडिंग मुद्दे हैं उन पे बातचीत करने के लिए, उनको सुलटाने के लिए जो है वो 5 मेंबरी कमेटी आज बनाई गई है, और 5 मेंबरी कमेटी
बना के, तो सरकार को कोई बात करनी हो तो उस कमेटी से कर सकती है, और उस कमेटी को कोई बात करनी तो वो सरकार से कर सकती है। आंदोलनरत रहेंगे या फिर वापस घर की तरफ जाएंगे, तो इस मामले पर कोई बात हुई आज? क्या फैसला? हाँ, इस मामले पे भी बात हुई, लेकिन ये जो मामला है वो उसका फैसला 7 तारीख में। 7 तारीख को अगली मीटिंग है। अगली मीटिंग तो पूरे संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग रहेगी? हाँ, पूरे किसान। तो एक आखिरी चीज मैं जानना चाहता हूँ, पहले कहा जा रहा था कि पंजाब के कुछ ग्रुप्स है जो वापस जाने के लिए तैयार है, क्योंकि तीनों के कृषि कानून वापस लिए जा चुके हैं। तो इस मामले में क्या अब सब तरह से कंसेंसस बन चुका है सभी किसानों का? आने से भी जाएंगे तो इकट्ठे जाएंगे, सभी एक मत से जाएंगे। कैमरा पर्सन संजय कौशिक का मकसद होंगे। We have Dr. Darshan Pal, one of the leader of Sanयुक्त Kisan Morcha. Sir, what all was discussed in this meeting? What were the key highlights? Actually, today was the main body meeting of Sanयुक्त Kisan Morcha, and we had discussed at length about our future course of action. We were waiting the central government to come out with the announcement that all the cases have been withdrawn, and also a clear-cut instruction on the formation of committee on MSP and other issues which we raised in on 21st letter which we wrote on 21st of this month, last month, sorry. But we did not get any response from the government. So in this meeting, we were very much disturbed with the attitude of the government, and we have planned that this struggle will be continued. Say for next coming 2-3 days, we'll wait, and we have formed a committee, 5-member committee, which will be having negotiation with the representatives of the government on the issues raised in the letter to the Prime Minister, and whatever the solution they come with, we will discuss with that on say next meeting, which we are going to organize on 7th of this month. विद कैमरा पर्सन संजय कौशिक का मकसद होंगे फैनी टीवी। कहा जा रहा है कि अमित शाह का, गृह मंत्री का फोन आया था आपके पास और बलवीर सिंह राजेवाल के पास में, तो उन्होंने क्या कहा है, किस बारे में उन्होंने? उनका कहना यही था कि भाई सरकार ने जब 3 कानून रिपील कर लिए तो निश्चित तौर पे सरकार जो है वो किसानों की समस्याओं का निराकरण करना चाह रही है एक दूसरे के प्रति, क्योंकि कोई छोटी कमेटी ना होने से सरकार भी कहीं ना कहीं संशय में थी कि किससे बात की जाए, और बात हम कुछ करें भी अधिकृत व्यक्ति ना हो, वो बात फिर आगे सिरे नहीं चढ़ेगी। तो उनकी जो शंका थी उसका निराकरण आज हमने कर दिया। एक ऑथराइज कमेटी उनके सामने जाएगी, बात करेगी और सहमति होगी तो बात खत्म होगी। तो मतलब गृह मंत्री का ये मानना था कि एक छोटी कमेटी, फोकस्ड कमेटी मानना था कि कोई जिम्मेवार हो, जिम्मेवार व्यक्ति हो, जो जिम्मेवारी लें कि जो हम कह के जा रहे हैं वो उसके हिसाब से बात सिरे चढ़ जाएगी। तो मतलब वापसी हो सकती है अगर सभी मुद्दों के ऊपर अगर एक तरह कॉम्प्रोमाइज हो जाए? वापसी, निश्चित तौर पर वापसी। कैमरा पर्सन संजय कौशिक, अमोक शेट्टी, फैनी टीवी।